Okay. So before we formally start, this is the Monday sessions, right? Why for Shravan? Shravan, I will always say Shravan is Shravan Kumar, right? So someone born in Shravan have to be like Shravan Kumar. Identical names are identical for a certain reason. Be, be cautious about it. So because it is for Shiva, let me do Om Namah Shiva in our mind. Once small mantra, very powerful, right? Om Namah Shiva. If you are doing Om Namah Shivaya for more than 10 times and you are not having a sense of cold in your body, then you are not pronouncing it right. Right pronunciation will give you a feeling of cold in your body. Small feeling of, not that you will get cough or something like that. Sensation, cold sensation. What Shiva is supposed to do. So the topic that I have written that day was Vamadeva Chitta Rupa. What is Chitta? The question one. The 4 hour sal. Because the Vamadeva, Vama means left, the god of the left direction, left path. Left path is Tantra, right path is Nigam. Right. So Vamadeva indicates the fourth avastha of Turiya. Three avasthas we know, right? Jagrat, Swapna, Sushupti. Jagrat is normal condition that we are right now. Swapna is dreaming. Sushupti is sleeping but not dreaming. Turiya is transcending all the three states. These are the 4 states, and my guru, once we were sitting on the side of a Talaseri beach in Dharmada. So just sitting there, and he was telling me, you want to eat this, you want to eat that, and I was not in the mood to eat something. So sitting by that seaside, we were discussing on the topic of Kriya. And he told me that the 4 kendras are the states: Jagrit, Swapna, Susupti, and Turiya. It should be taken in the sun's direction and not in. Always remember this thing, right? The horoscope is anti-zodiacal or anti to the clock, anti to the moment of clock, opposite to the moment of clock. These things which are progressive, like Jagrat, Swapna, Susupti, one state is only once you transcend the previous state. These things, whenever put into horoscope, is always pulled in a direction which is towards the motion of sun. So Jagrat will be first house. Swapna should be 10th house. So Swapna means dream, and 10th house indicates aspirations. Susupti is the 7th house. Susupti sleep is what you are supposed to do with the 7th house significations. A businessman will sleep with business idea in his mind. And Turiya, transcendence, is the 4th house. We will also see the importance of, whenever you say me Vama, I always say one thing. So, in Yagya, when you sit as a couple, there is always a question that where the lady should sit. So there is a sloka. Sada Bhavani Tahine. Right. The female deity is always on the right hand side. Sammukh Rahe Ganesh. Ganesh is on the opposite side, left. And etc. etc. The sloka is a bit big. The male god is always left. Female god is always right. Opposite for the case of Krishna. Krishna is always on the right. Radha is always on the left. So now with other deities, the deity is always on the left. The female deity is always on the right. Fine. Because females are always right, right? Don't debate. Not for that. So the Kriya.
and how we can use astrology to heal something. Technically diseases, but other things also, continuing the planetary philosophy that we were doing. Why healing? Vamadeva faces the north direction. Why not? Why left is north? Vamadeva is left, right? The god of the left direction. Left is Tantra. So Shiva is the ruler of Tantra. What is Tantra? People are afraid of it. It means mechanism, technically. So the astronomical calculations in astrology is called Jyotish Tantra. Whenever astronomical or mathematical calculation, etc., comes, it is always named as Tantra. So Tantra is the mechanism for anything, how the thing works. So the architect aspect of Shiva, the functional aspect of Shiva is Vamadeva. But why Vamadeva faces the north direction? What is the connection of Vamadeva north? I think we discussed about Dik Chakra one day in the class. I don't know if it was on a free class or in a normal class. We discussed about Dik Chakra, where the east is above the head and south is in the 10th house, etc. 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 So there are two approaches to a body part in the horoscope and in the Dik Chakra. So when you come to horoscope, which section of the horoscope indicates left part of the body and which section indicates the right part of the body, there is a very easy way to know this. Suppose as horoscope is behind you, this Shubha Malak is behind me. Suppose the horoscope is behind me. What will happen? This hand side, this is right hand, right? This is my right hand. You can see it as left, but it is right. The screen is mirrored. Technically, it is right hand. This will be ascendant, second house, third house, fourth house, fifth house, sixth house. These are will be the six houses. These six houses from the first house to the seventh house will be right hand side. Another one will be the left hand side. That is for the astronomical direction. So 12th, 11th, 10th, 9th, 8th will be left. And second, third, fourth, fifth, and sixth will be right. Lagna and seventh house will be divided into both the sections 50-50, 15 degree, 15 degree. But when it comes to DT, see, in horoscope, you are embedded inside the horoscope. For a DT, the DT is just standing in front of you. So north, that should technically come into the fourth house, comes to your left side, because Shiva is here and you are standing here. The horoscope is behind you, but Shiva is in front of you. Why Shiva is in front of you? Because you have to reach Shiva, you haven't been Shiva yet. So the Tantra is the functional mechanism becoming Shiva, technically. There is a Tantra for Vishnu as well, you know that. It is named as Pancharatra. Quite powerful. Vishnu Tantra is very, very powerful, but many people are not aware of it. But still, leaving that aside, because it is about healing, and there was a session that I had to do yesterday. Never did it. The day before yesterday, so it became postponed for 2 days. The basic Graha mantras, basic planetary mantras. This will start with that, so that you know the pronunciation and everything. And then I will also read that for you. So for two things, those of you who want to know about Sanskrit will know how the things are broken in pieces for a better pronunciation. And those who are going to pronounce it will have a pronunciation guidance also. I am quite busy. I have quite busy schedule. So
Class will be quick. Okay, so, okay. When you see the slides that I have prepared for today, made it on Thursday, you will find that there are four types of mantras. Graha mantra, mantra of the planet. One advice for the mantra of the planets. There are many types of mantras. Tantric mantras, Om Pram Prim Pram Rave Nama kind of, or Om Uranusai Nama, whatever you go with that. That is there in Astrology of the Seers by David Frawley. You will find the mantra for Uranus, Neptune, and Pluto also. God knows from where he got it. Right. Those are the tantric mantras, not advised. A single problem in your pronunciation with pram, prim, pram is going to be very heavy on you. And in tantric mantras, there's a complete process of asan bandhan, modi bandhan, mukh shuddhikaran, everything. Kavach kila gargala is quite very important. And that no one is going to give you because that thing is not available there. I don't support tantric mantras. Tantric things technically have a, when you use tantra for your own benefit, it will backfire. That's the reason I am generally reluctant before advising a tantra based remedy, and I will always advise the person to go for a puja itself. Because that will not see puja or worship is pleading to God that you should do this thing for me. Tantra is forcing him to do something. You will force him, he will do, but there will be consequences. Be careful. So tantra mantras, pram, prim, pram, pram, prim, pram, I don't recommend. There are Ved mantras for the planets that I'm going to tell you. Mantras are difficult, yes, but their results are very good. Regarding chanting, 1 lakh chant is the minimum count. 1 lakh chanting should be done. 1 lakh is quite a big amount. Can you do 1 lakh chanting in 1 day? 1 year? Quite difficult. Mantra will be big, how you will do. So there are few tweaks in between, right? This is how things always go, right? There are some tweaks in between. So, Vachik, Manasik, and Upamshu are the 3 types of japa. When you speak the mantra from the mouth, don't shout it. Stotra, you can shout. Mantra, you can. But when it's audible to someone, it is called Vachik. Upamshu is when the lips will vibrate, but sound will not come. This type. This babbling type. The children's. That is Upamshu. Completely doing it in mind is Mansik Japa. So, normal Japa is powerful. Upamshu is twice more powerful. Mansik is thrice more powerful. Using this thrice, your count of 1 lakh will be less a bit. 1 lakh divided by 3. That much time you have to do. Let me tell you something better. So in this Mansik Japa, there will be one question that, sir, we cannot concentrate. That is a big problem. Generally, you will write down the mantra and you will see the mantra with the eyes, right? So there is no problem of concentration. But still the basic thing that some spiritual guru should tell you, I should not, but still. In the starting meditation, in the starting part of the meditation, suppose as every word of mantra that you are chanting is being written in a paper on your head. Just imagine that these words are shining in my mind. That way, your concentration will be firm. If someone tells you, think of the image of the deity, let me tell you something, you cannot do that. That needs a lot of practice with mantras. Otherwise, you will start thinking the hand of the deity and then कमर आपका ऐसा झुका रहेगा, फिर नींद आ जाए, फिर आप सो जाओ, फिर आधे घंटे लगे मंत्र कर रहे थे क्या, oh my god, नींद ही आ गई. No. In starting, imagine the words being written in your mind. That way you will remain firm. Otherwise, I gave an 18-word mantra to one of my students.
After 1 year, I asked him what was the mantra. He told me 14 words only. And then 3 words somewhere lost in between. He was doing this. So a big mantra, you cannot remember every word. So better to look at it and have for starting 2-3 months every word in mind. Make it easy. The people like Om Burvasva Tasavitra Varenyam Bhargo Devasa Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. This is the Gayatri. Om Burvasva Prachodayat. This is what will happen. Because mind will go in trance technically when you will do the mantra, specifically if it is lyrical. That is the problem with lyrics. When you sing the song, what do? Tum mujhko mili la la la. What is this la la la? This la 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 should not come in, right? So be concentrated on the mantra. This la 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 will be a problem. Instant remedy. You cannot do it for 30,000 times at least. 30 multiplied by 3 is equal to 90,000, right? So 35,000 chanting at least if you are doing a mental chanting. Remember one more thing, mental chanting you cannot do from the first day. You have to do verbal chanting for at least 2 weeks, then Upanshu for 2 weeks. Only then you can go to mental chanting, otherwise mental chanting will not happen. You will start thinking on the mantra and your mind will start thinking on pizza khayenge, burger khayenge, and the mantra and pizza burger will go together then. This is what happens with human mind. Let me tell you. Practical experience. What happens with what students will say, etc. So 2-3 weeks it will take. 35,000 minimum count you have to do. If you do 108 every day, 108 should be taken as 100 only. It should not be taken as 108. The 8 mantras in the end is extra for the papa that we have done while doing the mantra. Papa, you understand? When I will speak something, some drops of what saliva will come out of my mind, so out of my mouth. और अभी इधर मच्छर बैठा कैसे उड़ाएंगे, उधर मक्खी बैठेगी कैसे उड़ाएंगे, और दिन भर मक्खी नहीं बैठेगी, लेकिन पूजा करते पक्का ही मक्खी बैठेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट स्थिर हो गया है. कभी कमर में ऐसा दर्द होगा, कभी ऐसे कान ऐसे करेंगे. These are all the dosha in the mantra japa. 8 types of doshas are considered. So this 108 is counted as 100. The extra 8 is for the dosha. Extra for the dosha. So 35,000 mantra, it needs 350 days. If you do one mala every day, 350 days is 1 year. It will take 1 year. Now you want by instant remedy. Sir, I am ill today. After 1 year, I will die. Probably. There is a very important aspect in mantra or in any remedy that people generally tend to ignore. Muhurta. When to do it? You cannot do a racing on a road on a day when it's been raining since last 4 hours. No matter which bike you are going to have. एक बार ब्रेक दबा के देखना, फ्रंट का डिस्क ब्रेक दबा के देखना, बाइक वहां रहेगी, आप अल्लाह को प्यारे सीधा स्वर्गारोहण वहीं से हो जाएगा, हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा. राइट टाइम, राइट मोमेंट, मुहूर्त, very important. For mantra, I think I don't know in which class, but I said that for muhurta, ascendant being influenced by malefic, best combination. Take that lagna influenced by as many malefics as it can be. 3 malefics influencing the lagna, best time to do a mantra. Malefics are there. Malefics help you somewhere. Helps you in elevating the karma. Will give you instant quick pay. What happened today? I was doing puja. I just woke up from puja, right? Just stood up from the puja and did the class. So when puja started, I was making the yantra. So I technically, if you are going to make a yantra, pen or pencil you cannot use to make, right? I have a wooden table, short table, small table, wooden table I have. I mix ghee with the object with which the thing should be made. Ghee with that colored thing. So if you are going to make it in yellow, you can take haldi. In red, you can take kumkum. Take the kumkum, mix it in ghee.
and then make the yantra is what you do. You are making it from pen pencil, it is not going to work. Pen pencil gods don't know what it is, right? कुमकुम को तेल से या घी से मिला के बनाते हैं. पैसा चाहिए तो घी से मिलाओ, शत्रु को खत्म करने का है तो तेल में मिलाओ. वो शत्रु बीमारी है कि टूटती हुई शादी है, अलग मामला. अगर कुछ चाहिए संतान पैसा तो घी में मिलाना है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट. The special things I do in Hindi, I don't know why. Okay. While I was doing that, a small fly, my house is not infected by flies, by the way. But when you do puja, no flies will come, sit project sitting there. It is also like, as like I want to let me make, let it will just take 2-3 minutes. So after 2-3 minutes, 2 minutes, I made it. After that, मैंने कहा रुक, मैं नाम नहीं जानता तो भाई मेरा. I just started. Guru mantra is the first mantra that you write. So one mala of Guru mantra I did, and the fly set on here. I was like, I set constant for 2 seconds. Fly was like, okay, फिर ऐसा मैंने मारा. And if you have ever killed a fly, you will find that she will fall on the जमीन पे गिरेगा. और मक्खी मरता नहीं है. तो थोड़ी देर में उठने लगा, तो मैंने कहा रुको तुझे मैं बता रहा. So when we used to go to gym, the thing was कि you do a push up on punch, right. तो उसको मैंने ऐसा एक मुक्का मारा नीचे रख के, मैंने कहा तुझे बताऊं परेशान करता है. Throughout the puja, आज मेरा ये दोनों उंगली राइट हैंड का इतना वाइब्रेट कर रहा है कि मैं ऐसे करके मंत्र, मतलब अभी भी if I keep it like this, it is still vibrating. So this thing, heavy karma will come, will go, will disturb you only throughout the puja, not throughout the life. A probable disease that can come. So I am pretty sure that the fever problem that I am having since last many days is going to over by tomorrow now. Had it sort of like my hand was shaking so much, I was like, am I having paralysis in the right side of my body? Ascendant influenced by Malefic. And there are many other considerations. Remember, for anything, be it marriage, be it mantra, Chandra Shuddhi, vital, very vital. Chandra Shuddhi is Janma Sampat Vipat, etc. So make your Navtara and see the star of the moon for today. Make sure that you don't start any new mantra or don't sit for a siddhi when the 3rd, 5th or 7th star is running. That Chandra Shuddhi, Tarabal is what we call it. Tarabal should be there. I have written an article, I think also, if you see. Okay, Shubham Alok ji. Mantra suitability was the name. I don't know when I wrote it. God knows. When I was in office, I used to write these things. Nowadays, I have been quite lazy. Yes. This article written on August 18, 2017, I have written this mantra suitability thing. There are many tables into it, right? So this is the Kulakula chakra. We use this chakra to find out, does the mantra belong to your family? Because if the mantra is not from your family, it will become, it will work for you is highly quite suspicious. So I have written it, right? Why we use words are written in Hindi as they belong to this alphabet. 6 chakras tables is to be considered. Extensive articles. So there is this Kulakula chakra, there is Rashi chakra, there is Nakshatra chakra. Right? Suppose the 3rd nakshatra is Kritika, that is bad. For me, suppose the 3rd nakshatra is Kritika. So I should not do the mantra with E or U. Om Ishanaya Namah, I should not do. Om Umapati Maheshwaraya Namah, I should not do U, E. Then there is this Gana Chakra. Gana Chakra indicates which tendency in me the mantra will activate. If I do the mantra with the word Ma, where is Ma? You see Ma here? Ma. Right. If I do the nakshatra of mantra Ma, it is the human one. So the human things will be there, right? Then there is Akadam chakra and Agatha chakra, very important. Don't forget it. How to use it is written there. The mantra is best, medium, best,
or prohibited. Best mantra you should take. Prohibited is very bad. The mantra is your enemy. You will do it. It will work for your enemy, not for you. And there is Rinadhana Chakra. So Rinadhana Chakra, you need to find out whether you did the mantra in the previous life or not. It is all based on your horoscope, etc. And done. Finish. The article is quite heavy. It will be some 2,000, 3,000 words as far as whatever. This article should be considered. There are multiple considerations for a mantra. After considering all of this, you will have one suitable mantra. A mantra is a serious business. That's why I don't give mantras. And anytime in the class, you do this mantra, you do that mantra, I will never do that. It's serious business. After, okay, two things here. Nama mantras such as Hari Om, Jai Shri Ram. Nama mantras can be done by anyone, point one. Siddha mantras, Gayatri mantra, Mrityunjay mantra, or Swastina Indra Vridashirvaha, Swastina Pusa Vishwaveda, Swastino Brihaspati Dhatu. These Prasiddha mantras can also be done by anyone. Other than this, any special mantra, check the list, don't forget that. After that, you have to find the good Taravala for you. And then an auspicious day. For female deities mantra, moon in Shukla Paksha is good. For fierce deity mantra, moon in Krishna Paksha is good. But even in Krishna Paksha, moon should have power. So Krishna Paksha will only go from Krishna Pratipada to Krishna Ashtami is only good. Krishna Ashtami to Amavasya is only good for Kali mantras. Shukla Pratipada to Shukla Panchami is good for Devi mantras. And Shukla Panchami to Purnima is good for Lakshmi mantras. So that's why Lakshmi is worshipped on Purnima always. And Navaratri starts from Amavasya always. Right? You want to do the Rama mantra, then Navami is there. Krishna mantra, Ashtami. Hanuman mantra. Ganesha mantra also Chaturthi. Hanuman mantra can be done in many days. The birthday for Hanuman is not fixed. Vishnu mantra Dwadashi. Shiva mantra Triyodashi. Kamadeva mantra Chaturdashi. Or mantra for marriage Chaturdashi. Which Tithi have the power, right? That I did Tithi remedies. One, I think that is available there on YouTube. Tithi remedies 2, maybe somewhere in near future. Important thing. You want result in one day, but you don't have 1 year. When Grahana is there, doing mantra that time is, you get the 1,000, 1,00,000 guna phal milta hai. The result is 1,00,000 times. So one mala in the Grahana time is 1,00,000. Resultant is equal to 1,00,000 times. But you should be navel deep in water. Natural source of water, navel deep. And then you should do the mantra. Sitting in the home, no. It should be on a holy place where generally humans don't go. For the home, people who cannot go navel deep in a riverside, etc. Riverside, you have to be cautious, right? ग्रहण समय में कब भूचाल, कब ज्वार भाटा आएगा पता नहीं चलेगा. पता चले मंत्र करने बैठे थे तो सर दिल्ली में, लेकिन निकले हैं बांग्लादेश में. लाश बांग्लादेश से प्राप्त हुई क्योंकि भाटा आ गया नदी में, बह लिए साथ में. So for people in home life, I recommend the Grahan Shishta Kala, the middle portion of the Grahan is for a duration. Do the mantra without counting the number in that complete duration. What happened? Let me tell you some days ago. Grahan was there on 5th or some day, right? I called one of my friend. Before this, I was angry with my mother, right? So we had some small bit of fight. She was like, you woke up at 9:50, Grahan starts from 10:03. What you will do? You haven't even did brushing your teeth, etc., etc. What you will do? What you will not do? I told her, कौन घटिया ज्योतिष बताता तुमको ये सब बताओ. जो YouTube पे ज्ञान मिलते हैं ग्रहण में ना, उनको तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि अपना चेहरा लगाने YouTube चैनल पे बताओ. पता नहीं कौन सी फोटो के पीछे से आवाज आती है ऐसे. तो सोले में वो बोलता है शिव जी के पीछे से बसंती को. So
like, so I was frustrated. I called my friend. I am like, what are you doing this that? And I was just telling him, मैंने कहा यार ग्रहण शुरू हो रहा है 10 बजे, खत्म होगा 3 बजे, तू बैठ के मंत्र करेगा? तो सुन, मंत्र का प्रभाव हो ना हो मत मैं नहीं जानता, इतनी देर लगातार बैठने से पिछवाड़े की नस दब जाएगी बाबू, खड़ा नहीं हो पाया दोबारा. So the spirituality have a limitation. Middle portion of the grahan, that much time, that 1 or 1.5 hour, you should sit and do the mantra. Start of the grahan to the end of the grahan. Don't torture yourself. जबरदस्ती शारीरिक दंड देना पाप है. Why graha mantra? Because I told about, we talked about this yesterday in the class, that planets are also the manifestation of Vishnu. So for that reason we should worship planets. Otherwise there can be a question, if planets don't cause events, why we worship them? Because they are also the form of Mahavishnu. Other than graha mantras, if you go through the list, you will find that there are graha mantras. This Surya mantra, Om A Krishnena Rajasa Artamano Niveshayanna Mritmartincha Hirannena Savitarthena Devo Yati Bhuvanani Paschim. Om A is separate, Krishnena is separate, Rajasa is separate, Vartamano, there should be one word, not two. Vartamano, Nivesha 1, Yanna 2, Mrat 3, Mratincha 4. So 4 words in one. Right? Hiranyena, Savita, Savita, Rathena Devo. Savita, who is on Ratha chariot, Devo. Yati, Uvanani, Paschina. This is the mantra for sun. Sun mantra will do everything that is indicated by sun. Fine. So I just made a Facebook post some days ago. Doing sun mantra is, I'm just having blurry vision in this eye. This is what right eye. मारने का ज्यादा ही भारी जब बोलना पड़ रहा है, लग रहा है कल से नहीं मारेंगे. This mantra is for sun, but everything of the sun can this mantra resolve? No. What sun does as per his natural signification for a certain house or with a certain planet will be resolved by the Griha mantra. For an example, sun in the 7th house will tend to cause ego clash in marriage. This mantra for sun will only take care of that ego clash in marriage. If the sun is the 8th lord, then the problem of 8th lord being in the 7th house will not be taken care by this mantra. Another is the mantra for Shiva. Shiva is the second part, Sugandhim Pati Vedanam. This is what people tend to do. I took it from some book. It is a slipping tool ka karamat hai, apne haath se likha nahi maine. This Pati Vedanam, don't do this, right? It is like लोगों ने मंत्र में अपनी मर्जी से छेड़खानी करके महिलाओं के लिए भी मंत्र बना दिया है, कुछ जरूरी नहीं है करने का. The first thing, त्र्यंबकम में जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान उत्तरमुक्षयमामृता. This is the mantra for sun. Sun is the Adhidevata for Shiva. Adhidevata is ruling deity. Then this Agni is Pratyadhidevata. Pratyadhidevata is the commander appointed by the ruling deity for the planet. So when the ruling deity is the motivation of the sun, Adhidevata. Pratyadhidevata is the emotion of the sun. And how you see emotions, right? Emotions from Bhava, motivation from Rashi, right? You remember that I teach it in courses. The third Agni one is the Graha Devata, just the normal deity for the planet. So the third Agni mantra is normally for sun, should be done for the aspects of sun. The last one, Indra mantra, is a special D10 remedy.
Om Tradaramindram Avitaramindram Ave Have Suhavram Suramindram Havyami Sakram Purohutmindram. This is this thing is right? Ruhutmindram Sastino Matvad Atvindram. This Indra mantra is the D10 mantra, okay? Profession related mantra. The Lord of 10 directions are also the Lord of D10. So if sun is creating a professional problem by transit, etc., then this thing should be done. Om Trataravindram Mavitaravindram. This is trum. The line over tha is ra, trum. This ra is pronounced by having your tongue touch the upper portion of the word. Trum. Trum. It is trum. This trum is done in mind. Whenever you chant a mantra, even verbally, and when I will do Om Brahmagamayahay Sugandhim Pushtivardhanam Murvarakame Vandanana Mrittaramokshayamamrita, this Om should be in my mind first. And Om should be at both the places, in the starting, in the end. So I should do Om in mind. Akrishtina Rajasa Vartamano Nivesayana Mritamartasya Hranena Savitarthena Devo Yati Bhuvanani Paschan Om. Om in the starting, Om in the end. If you don't put, see, this is why people say don't take mantra from books. Because Om should be in the end, no book will tell you. But Om is there in the starting, in the end, at both the places. So between two mantras, there will be two Om. One for the ending of the previous one, second for the starting of the one. So two Om will be everywhere, in between, in between, in between. This is called Gomukha. This Om, the two Om together is Gomukha, which is between the mantra. So Gomukha repeats. I'm just going to read the mantras for you, those of you who want to know the pronunciation, and then we will get on to the top. The first Agni mantra is Agnim. The dot above this is Na. Agnim, that is Ma. Dot over Ma is Ma. Agnim. Dutam Purodde. Havyavaha Mupabruve. Any word that you don't understand how it is pronounced, you can ask for it. Devam. After Devam, it is written two. Two means repeat twice. Devam, Devam. A Sad Yadi. So it will be Agnim Dutam Purudde Havyavaha Muprave Devam Devam Asadayadi. Right? It is Asa Dayati. Asa Daya is not there, right? This is the mistake that you people will do. That's why I'm telling, have the mantra written in front of you. It is Asa Daya, not Asa Daya. The is not a. It is single the. Asa Daya, not Daya. Daya is to give. Daya is mercy. The second is Sanaha. Pite Vasuna Vegne. Supayano Bhava. Why I am reading it? So that you know Pite is one. Vasun is one. Vasu is one. Navegne. Sorry. Pite is one. Vasu is one. Navegne is three. Supaya is four. Nobhav is five. So where to break the mantra? See, Pitevasu is one. Pitevasu is something else. So Pitevasu is not the thing. Pitevasu is the thing. For this simple reason, I am just pronouncing it. Otherwise, what you will make out of it, God knows. इंद्र भी सोचेगा कि मेरा ही मंत्र कर रहा है क्या यार, किसका मंत्र कर रहा है भाई, ऐसे तो नहीं था. So this last mantra I did right. Om Trataravindram Mavitaravindram Have Have Suhaprap Suramindram Havyami Sakram Purotmindram That thing is separate. This is separate. This one. Swastino Madhva Bhatindra. Indra mantra, if you want to have money in life, Indra mantra is must. Indra is the ruler of money. That is, just Narad always does not. Narad always does Vishnu. Indra always does Lakshmi. That's why Indra is Indra. Is Lakshmi? Chandra. The mantra for Chandra is quite difficult, right? Yeah, that's why mind is difficult to control. This should be Asapatanam, right? It should not be Trump, it should be Nam. Om Imam Deva Asapatanam
सुवद्ध महते छत्राय महते ज्येष्ठाय महते जान राजयेन्द्रस्येन्द्रियाय इमं मुष्ये पुत्रमस्य विश्व एव एष वो भी राजा सोमो अस्माकं ब्रह्मणानाम अम राजा. This is the big moon mantra. This see, Om Akrishnena Rajasa, Om Imam Deva. These mantras work. Recommended. Will work fantastically. बहुत बढ़िया काम करेगा. You do Om Pram Prim Pram Chandrama Devataye Namah. God knows. I will give guarantee on this, not on Pram Prim the Chandrama Devataye Namah. I won't. If you right, the Uma mantra, right? Parvati is not worshipped. Uma is like different forms of Parvati is worshipped, but Parvati directly is not worshipped. Because since she was the daughter of Parvati, she was not a goddess. Once she became Uma, she became a goddess, right? So Sri Chate Lakshmishcha Patanya Ratre Parshve Nakshatrani Rupam Ashwinav Vyatam Ishannishana Mum Aishana Sarvalokam Aishana is how it is pronounced, right? The name is the next is the Agni mantra. Om Anen Yudvihi Satini Viradra Trump. The Trump you remember, right? That is Ra. That is Ra of that Trump. Sahistrani Virupayi Yakyam Vayo Asmin Sapwane Malayaswa Yuyam Patas Sustivihi Sadana is how it is pronounced. The next one is Paswagane Sadishtaha Vasausadi Runurudyase Garves Sanjayase Punaha. I am doing this like jaldi I will do it, right? So that we can get back to the topic. Apa is Apo Adhyanavacharisathram Rasena Samasrikshamahi Payaswana Nagna Agavandamasatram Surja Varchara. That is right. Sorry, Varchama, that's more. Varcham Sa Prajya Cha Dhanena Cha. This thing above is the, we do this halant thing. That is for Ma. This is Ma. Ma is right. These are the when you add two words, some words go above and below. So that is Ma. This is the mantra for Moon D60. Sorry, Moon D10. So that's why Moon D10 is quite difficult to remember, right? The mantra is quite difficult. Now next the Chandra mantra. Vipulji is here in the class. Yeah. So Vipulji, Om Agni Murda Divah Kukutpatihi Pratibhya Ayam Apaham Pretaam Srijinvati. Om Agni Murda Divah Kukutpatihi Pratibhya Ayam Apaham Pretaam Srijinvati. Srijinvati, I have died. Please make me live again. First and the eighth lord in the natural zodiac, right? मेरे शरीर में फिर से प्राण का सिंचन करो. Second is Om Yad Grantha Prathama Jayamana Udyanta Samudra Dutava Purishat Sayanasya Paksha Hiranyasya Bahu Upastutyam Mahim Jatam Te Arun. When A will come twice, A is also here, A is also here. This first A will not be pronounced. It will be it will be a continuous A. Big A, but it will not be pronounced twice. The Yama mantra for the D10 remedy of Mars will be Om Sugannu Pantham Pradeshan Ehi Jyotish Madveha Jyotish Madveya. That is here. Her, after her there is yours. Ya Jaranna Ayu Apaitu Mrityura Nutam Aga Dvayavasvato No Abhayam Kiranotu. The mantra for earth, these are the two mantras for earth. Syona Prithvi No. Pavandrikshara Niveshini Yakshanna Sarva Sapratha. Second mantra is Chidusi Taya Devatayangiraswad Dhruvasida Parichidasitaya Devatayangiraswad Dhruvasida.
This PDF I will put on archive, and when the video is uploaded, the archive thing will be there in the link, so you can go there and download the PDF. So few things I am now putting on archive also, so you people don't have to note it down by Buddha mantra. Om Udbuddhya Swagrepati Jagrahitmishta Urter Satam. Ma, right? That above thing is ma. Srijetha Mayancha. Asmintas, right? I'm here. Asmintas Adasthe Adyuttarasmin Visvedeva Nijmanaschadita. This is very, very, very favorite mantra for Vishnu, used in multiple pujas. Greh Pravesh Vastu Puja will not be done with this mantra. Om Vishnu Raratmasi. Very important. Few mantras for every planet is very important, right? For Mangala, this Agni Murdha is very important, right? In moon, this Sri Chadai Lakshmishya Patnyavara Vahoratri is very important mantra. For Surya, of course, every month, all these three, Agastyan Rajsa, Trambakam, and Rataraman, all three of them are very important. So this is the best Vishnu mantra, best one. Om Vishnu Raratamasi Vishnu Sanpatristoh Vishnu Sivurasi Vishnu Dravesi Vaishnavamasi Vishnavetva. Very important Vishnu mantra, right? There are like this is the Veda mantra from Vishnu from Rig Veda. Om Idam Vishnu Vichakrame Treda Nidade Padam Samooda Masyapa Am Sureswa. This is also quite important. The third mantra is just the above mantra itself, right? Om Idam Vishnu Vichakrame Tredha Nidade Padam. Tredha Nidade Padam. Samooda Masyapa A Sure Swaha. This is A, not Asure. See, remember, don't say Asure Swaha. He's not Asur. A Sure Swaha. असुर नहीं बना देना विष्णु को, बहुत मारेंगे विष्णु, ऐसा मारे तो भाला फेंक के. And the Kuber mantra, right? Everyone wants the Kuber mantra. And Mercury rules the direction of Kuber, right? But remember, for Kuber, human is a vehicle. Om Vaya Ram Som Vrate Tav Manastanushu Vibrata Prajavanta Sachemi. There is one dot above that is small, you cannot see it, what it says. So it is Prajavanta. See, Prajavat is not a Sanskrit word. Prajavat is Hindi Sanskrit mix. Prajavant is the lord of the people. That's why Kuber have humans as a vehicle, right? Lord of the people. Brihaspati mantra. Om Brihaspate Ati Yadaryo Ahardyu Madvibhati Kritu Majjaneshu Yatti Dayachvas Arit Prajat Tadasmasu Dradam Dehi Chitram. And there is one Indra mantra. Maham, it will be two is done twice. Maham Indro Vajrahastha Sodasi Saramayachatu Hantu Papmanam Yosman Dveshti. And the second one is Indra Asanneta Praspatir Dakshina Yagyaha Pur Etu Somah Devasena Namavi Pajanti Na Jayanti Namruto Yantvagram. This one Indra, this because it indicates it is Sodashi. This mantra is very important if Jupiter is afflicting the 7th house, because Shodashi is a 16-year-old girl. Jupiter rules the 16th year, right? Don't go into Khatpayadi with all these mantras, it will be a heavy calculation for you people. Why few things are written together in Sanskrit? For a certain reason, of course. Otherwise, see, in the previous mantra, Idam Vishnu Vichakrame. If these three are written together also, there is no difficulty in pronunciation. Then why they are three different words? The mantra for Maheshwar, the detailed mantra for there will be Om Tamishanam Jagatastuspati Dhyanjinvam Avase Kumahe Vayam Pushano Yatha Vedasha Masasad Vrdhai. This will be Masasad Vrdhai.
Rakshita Payuratabdha Swastye. And the Brahma mantra you can see, right? Om A Brahman Brahmano Brahma Varachasi Jayata Maharaspre Rajanya Sura Ishabveti Vyadi Maharatho Jayata Madogri Denurvoda Anadavana Shu Sapti Puradanyursha Ishnu Pratishta Sobhayo Yuvasi Yajamanas Viro Jayata Nikame निकामेन परजन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यताम योगक्षेम न कल्पताम वेग mantra. If you can sing the mantra, it works better. If you cannot sing it will not work. Do only 10 chanting. आराम से करिए. 10 chanting will work. Otherwise, I was about to tell you one shairi. While I was in the bathroom, I was thinking I will say this. My favorite shair have some words that is in Punjabi, so I will tell you in Hindi. If there is no love, then what is the use of garland, ornament, etc.? If there is no love towards the God, if the feeling of the mantra is not there, then a mere chanting is not going to work. Have it in mind. Shukra, everyone wants Shukra. The Shukra mantra I gave to like one of my clients, so she will watch this video for this only. Om Annat Paristru Torasam. Om Annat Paristru Torasam. Brahmana Vyaktivat Chatramampyah Somam Prajapati. Ridena Satya Mindriyam Vipanatram. Sakravandas Indras Sendriya Midam Payo Martamatu. In this PDF, whoever wrote it, there should not be two ma. There should be one ma only, right? There will be only Madhu, not Mamadhu. Mamadhu is not a word. Madhu should be there. And there are two mantras for Indrani. No one is going to give you, right? Indrani mantras are not available. There are no temples for Indrani at all. So how do you do mantra? The Indra mantra here is Sajosha Indra Sagano Murdbhi Somam Pyo Vitriha Sura Vidwan Jahi Satrum 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 3 Rappa Mirdho Nudaswa Swatha Bhayam Kiruhi Vishwatona. Indra mantra. Then Indrani mantra, this is my favorite. Sukra Jyotisha Chitra Jyotisha Shakti Jyotisha Jyotis Masya Sukrasya Arit Paschatya Tramha. This is good mantra. And this is the Indrani Devi mantra. This is a very good mantra for marriage problem, right? I should not tell you secret, but still. Indrani have the best marriage. Indra have the best wife. Because Indrani never talks any other word than Indra. Sachi. You know why Indra is fortunate? Because Sachi only thinks of Indra. That's why. Sachi Indrani is the same lady. Their marriage is the best. Their marriage is considered the best marriage. Sachi don't even say that I want food. She only says Indra. She never took any other word into her mouth other than Indra. So, Sachi is the most fortunate lady. Indra is the most fortunate husband. That's why Indra is Indra, because he has Sachi. उसके घर में असला बारूद बढ़िया रखा है उसने, इसलिए उसको हराया नहीं. उसको हराना संभव नहीं सची की वजह से. यू रिमेम्बर राइट, जलंधर को जब हराना था तो yes, she is the one who helps him prepare the best सोमरसा. जब जलंधर को हराना था तो जलंधर की पत्नी को छलने के लिए विष्णु नीचे चले जाते हैं. पत्नी अगर बहुत बढ़िया है तो आदमी को कुछ हो नहीं सकता अकॉर्डिंग टू द वेदास. अगर आपको घर में कोई एडवाइस मिल रही है तो बाहर वाला शत्रु क्या ही कर लेगा. सो इंद्रन देवी विर्षो मरुतोनुवर्तमानो भवन्यथेन्द्र भवन्यथेन्द्रेन्द्र देवी, right? That will be Indra. There should be one E in between. Bhavanya Devi. There should be a E. Indran Devi should be the last word.
वृषो मरुतोऽनुवर्तमानो भव एवमिमं यजमानं दैविश्च विशो मानुषिश्चानुवर्तमानो भवन्तु। एंड द अग्नि मंत्र ओम त्वन्नो अग्ने तव देव पायुर्भि मृगोनो रक्षतन्नो रक्षतन्वश्च वन्द्य त्राता तोकस्य तनये गवामस्य निमेष। Now this third is directly written as th and ra is also there, so you should eliminate this ra above. Traksha manasto vrti. This is how is thir is pronounced. If you ignore the above thing, this is how the thir will be pronounced. Whenever the pronunciation is too fast that you cannot make a distinction between the word, it is told with such symbolic words. In Shubham, ma is should be pronounced fluently. Shubham, Shubham, Shubham. The ma is not that prominent or independent in the name. Shani. This one is favorite mantra, right? Om Shanno Devir Vishtaya Apo Pavantu Pitaye Sanyora Vastravantunah. Om Pram Parim Pram Sahasaniya Namah. Next is the Yama mantra. Yamayatva Makhayatva Suryastva Tapase Devasta Samutva Madvanaktu Prithivya Sa Sprashaspi Aracharasi Sochirashi Taposi. A Yama mantra never do in your home. Shani Puja never do in your home. I have many clients who got a Shani Puja arranged in their home and their lag gaye fir. Okay. Shani ki puja, not in home. The Prajapati mantra is Om Prajapate Natva Detanyannyo Vishwarupani Prita Babhub Yat Kamaste Juhumastanno Astu Vaya Asyama Patayorainam. And the Prajapati mantra, the next Prajapati mantra here is प्रजापते नत्व देतानन्यो विश्वारूपाणि प्रीता बभूव यत् कामास्ते जुहूमस्तन्नो अस्त्वयममुस्य पिता सावस्य पिता वेठ्रम श्यामपतयोर्नीया स्वाहा रुद्र यत्ते क्री विप्रन्नाम तस्मिन् उत्तमस्य मेष्टमासी स्वाहा. And there is one Varun mantra also. This is for D10. Om तत्वायामी ब्रह्मणा वदम मानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वर्णे हवोद्युरुष्ट्रम समान आयु प्रमोषि. And there is Rahu Ketu mantra. Should we do Rahu Ketu mantra? Should we leave the Rahu Ketu mantra? क्या करेंगे Rahu Ketu? Very important. Many people want Rahu Ketu. So the first Rahu mantra is O Kaya Naschitra Abhuva Doti Sudhavada Sakha Kayas Chisthaya. This is the Rahu remedy one. Rahu mantra one. The mantra for Kala is Karshirasi Samudrasatva Chitya Unnayami Samapo Adviragmat Samosadi Viroshadi. The Pandang mantra is Ayango Prashnirkramid Sadanamataram Puraha Pitarancha Paryantaswaha. The Sarva mantra is Namostu Sarpebhyo Ye Kecha Vratrimano Ye Antarikshe Ye Devi Devya Sarpebhyo Nama. A very good mantra to win in lotteries. Point one. Many good mantras for having your own home, etc., properties, etc. Very good mantra. Sarva mantra is quite famous. And now the mantra for demon. Niritti. Om Asunvatam Yajman Mitchaste Nasyetya Manvi Hitaskarasya अन्य मस्मादिच्छसात इत्या नमो देवी नृत्ते तुभ्यमस्तु. सर्प मंत्र घर में करने से सर्प आएगा तो मेरे को फोन नहीं करना, पेस्ट कंट्रोल वाले को फोन करना. Let me tell you, this mantra of the fierce deity, the best place to do is that place where the ants like live. Bambi it is called, and Bambi Grihi is the second most favorable place to do a mantra. The first one is where cows live. Gaushala, pehla favorite place. Bambi second.
Doing mantra on the seashore, riverside, in a cow shed, in a place where ants make their home. मिट्टी घर में बम भी बनाता है ना चीटी लोग करके. Doing mantra in these places or tantric kriya in these places is more powerful. Better. Hunt for these places. घर में पूजा करने से तो. That's the reason every year at least 2 times I go to Puri. So people think why I go to Puri. मेरे को तैरना नहीं आता. I just go for the mantra there. I am quite afraid of water. अरे भाई आदमी रहो मछली क्या बनना है? Be like a man. Why you want to become a fish? उसका काम उसको तैरने दीजिए. I never even sat on a boat. I think भाई गिरेगा ये तो क्या अपन भी जाएंगे. Go to those places for mantra chanting. क्योंकि यमुना के किनारे तो दिल्ली में तो खैर मंत्र क्या ही आप करेंगे. देखिए हवा का कोई मंत्र नहीं है यमुना के किनारे. हवा आने से अगर कुछ हो गया तो केतु मंत्र लास्ट वन. ओम केतुम कणवन्न केतवे पेशो मर्या अपेशे समुसद्भि व्रजायथा. केतु मंत्र. चित्रगुप्त मंत्र. Brahmins in the middle time did Chitragupta mantra so that their bad karmas are not recorded and they don't get help. Chitravaso swastiste parmashi. This is one 3-word mantra only. And the Brahma mantra on the right hand side is Brahmaj Jnanam Prathamambu Rasta Dusimatah Suru Choven Avah Subdanya उपमा अस्य विष्टाः सतश्चयोनिम सतश्च विवाह. And Brahma's second mantra, right hand side lower mantra is Brahmaj Jnanam Prathamam. The one from above is this one also, right? These two mantras are the same, just it is with more breaks, and this is with less number of breaks. So the same thing. Brahmaj Jnana Prathamam Purasta Dusimatah Surucho Ven Avah Subdanya Upama Asya Vishtaha Satascha Yonim Satascha Viva. Right, and this mantra for D10. Om Asme Rudra Mehana Parvataso Vritrahatye Bharahuto Sajosha. Sorry, Bharhuto Sajosha Ya Satram Satestu Vatedhai Vajra Indram Jeshta Asmam Avatu Deva. Two is do it twice, tell it twice. Pronounce it twice. And the mantra for Anant is Om Syona Prithvino Bhava Nikshara Nivesini Yakshana Saramasatha. These are the Graha mantras that I wanted to do today. And what I have written in the last part, yes. Other than these planets have many stotras, Kavacha, Hridayam, etc. attached to them. We'll cover it in upcoming free classes. After this Shravan, there will be Vaisakh, Jyeshta, Asad, so Vaisakh classes can also be there. Don't worry, I'm quite very bad with ideas. We will study them one after another in this series of Vedic remedies for planets. I made the slide with intention that it will be taught on Sunday. Never happened. Remember, remedy is not a child's play. People should remember this very seriously. 501 रुपए में पत्रिका देखने वाले ज्योतिष भी मुंह उठा करके मंत्र बोल देते हैं. मुंह धोके आए नहीं कि मंत्र बोला नहीं. It is quite a serious thing. There are also many normal suktas such as Pavaman Sukta, Sri Sukta, Hiranyagarbha Sukta, Prithvi Sukta, Ratri Sukta, Devi Sukta, etc. etc. It also works quite fabulously. A bit more on remedies for next 20-30 minutes. Yeah. Okay. So these are the basic Graha mantras, right? These are the basic Graha mantras. Basic mantra, as we know, is basic, right? For foundation. Sometimes when you go to perform a remedy for the planet, you may not be able to perform the remedy. In that scenario, basic mantra done first. Sir, I am not getting the result of an exalted sun because your karma is not like an exalted sun. In previous life it was. But what you did in this life? You remember?
So now this life's karma, kriyaman karma for this life is something which tells me that the result of sun should not come. In that scenario, the basic sun mantra should be done first before doing any remedy. Achha, now there is one very important thing. Someone have done a bad karma throughout his life. He had a good son, so he had a good father, but he just robbed his father throughout his life. Now he came to take a consultation. How will I know the karmas that he did from the birth time up to this extent should be known from Prashna. This is what Prashna Marg tells in chapter 1 in the last 4-5 shlokas. That Prashna tells you Kriyaman Karma, hence always cast horoscope along with a Prashna. If the 7th house is afflicted in both the charts, if the 7th house is afflicted in both the charts, in that scenario, remember the past life bad karma related to marriage is coming. If the 7th house is only bad in natal chart but not bad in the Prashna chart, then have it in mind that good results are only coming because of good deeds that you have done, and bad results will come. In this scenario, Prashna is valid for 1 week. Only in this scenario it is valid for 1 week. Otherwise, Prashna is valid for a lifetime technically. So if the things are repeated, the same indications in D1 chart and the same indications in D9 also, sorry, Prashna also, then it is a past life karma, otherwise a new life karma. Fine, okay, good. Let me do some serious jyotish. Subham Baba ke kadve provision, right? How, first of all, a client come to me, consciously or unconsciously, he can do some planetary remedies, right? If he have done it consciously, he will tell me. If he have done it unconsciously, how will I know? Right? So, Prashna is the key. Any planet who is, there are 3 rules. There are 3 rules. Sorry. In Ashtamangal Dev Prashna that we do in Kerala, there is a habit of checking the remedy. Will the remedy work? We make a Prashna for everything, we make a chart for everything. Is there a chart for remedy? Is there a chart for remedy? Yes, there is. So in Ashtamangal Prashna in Kerala, the last day, like last portion of days, if it is for 6 days, then last 2 days. If it is for 10 days, then last 3 days will be for remedy. And one astrologer will recommend the remedy, and there will be tantric, etc., who will say if the remedy can be done or not, because customs are different for different states. In South India, Hanuman is not worshipped. In North India, Skand is not worshipped. Kali worship is entirely different in Gujarat and in Calcutta. In Calcutta, they love Devi. गरबा तो नहीं कर पाएंगे. गुजरात में तो गरबा कर लेते हैं. So, Dolira what? God. The last day there is a discussion of remedies. And there is a method given in Prashna Marga, and my guru said that don't do the Prashna Marga method, it doesn't work. This is the thing that comes from the tradition, right? You know what to ignore in the books. So, method is quite simple. Take a new Arudha. Arudha can be taken from the word that the person will utter. And multiple things, you can also give him a number, or if it is a strict Ashtamangala, then it will be Kaudi Sankhya, right? The Lakshmi Kaudi, the Sankhya. So not doing this Kaudi method, that is quite difficult. You have to be good with mathematics. So what happened in quick Prashna, I taught this Ashtamangala number, and I said it is my innovation. So they are like, sir, you are teaching what is written in Prashna Marg. What is the innovation? Let me tell you.
प्रश्न मार्ग says the client will come to you, have some कौड़ीज there. कौड़ीज is ना लक्ष्मी कौड़ी जो चढ़ाते हैं उधर, क्या दीपावली में, that is कौड़ी. So प्रश्न मार्ग says as client should take one handful of कौड़ीज and give it to the astrologer. Astrologer will divide it into the sections of 4. So 4, 4, 4, 4, 4, he will make divisions. He will divide it into 3 first. Past, present, future. Divide it into 3. Astrologer will divide it into 3. In that 3 also, he will take out the multiples of 4, 4, 4, 4, 4. The Kauris remaining is the Ashtamangala number. First number indicates the past, second number indicates the present, third number indicates the future. There will be 3 planets for the 3 numbers, so you should see the planet, etc., etc. Taught it in Prashna level 1, और जिन्होंने पढ़ा है वो तो जानते ही है क्या ही मजा आता है उसमें. Leaving it aside, so I told it is my innovation. So one student messaged me, sir, इसमें innovation क्या है? It is written in what प्रश्न मार्ग. I like innovation ये है बाबू, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो वही अक्षर बनेगा जिसका टोटल 12, 20 और 8 आता है. तीसरी कोई संख्या आएगी नहीं. ये बात आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आप हाथ में बनाओगे नहीं अष्टमंगल. This is something you will never get until and unless you do Ashtamangal yourself. A handful of 108 cowries. If you make a portion, if you make a division by 4, any number will be have a total of 4, 12 or 20 only. Sorry, not it. 4, 12 or 20 only. Isn't it? You tell me what is the Ashtamangala number can be anywhere from 111 to 888. Ashtamangala it is 8, right? So not 9. 888. Now can the number be 263? 639 2 11. So 263 cannot be an Ashtamangala number. 264 can be. That's the innovation. Okay. When you do Ashtamangal, you know that the number which is not a total of 4, 12 or 20, that cannot be an Ashtamangala number, right? This is the thing that I say, that I told you the technique, right? But there is something in between that you will never know until you do it. You will know one certain number will never come. One certain thing never happens in calculation. It is like a square, right? So horizontally, vertically, from both directions, it should be divisible by 4. Coming to my point. In Ashtamangala, we take a new Arud either on anything, right? Based on the letter that the person will utter, name of the person, etc. And if a good planet is strong in the Kendra from the Arud, influenced by Jupiter, remedy of the planet is already done. So when you make a prashna, check the Arud. And if in Kendra to that Arud, there is a benefic planet, strong. Malefic can also be there, strong technically. A strong planet influenced by Jupiter. The remedy of that planet is already done. No worries, no tension. Otherwise, पिछला ज्योतिष के पास आप गए थे, आपने उसको बोला कि 5 साल पहले, 5 साल बाद सर सूर्य की दशा आएगी, उसने बोला भाई सूर्य का मंत्र करो. फिर दूसरे ज्योतिष के पास गए 3 साल बाद, तो उसने भी बोला मंत्र करो. मेरे पास आओगे, मैं भी बोल दूंगा. अरे मंत्र ही करता रहेगा ये आदमी, क्या जिंदगी भर फल नहीं मिल रहा उसको. फल प्राप्ति का काल भी तो आपको पता होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, he have done the remedy or not already. If he have done the remedy already, then do the next mantra. Why go on the previous one? So is the mantra done or not? That should be seen. Okay. Now, Puriya thing, let me cover it tomorrow or some other day. Although my weekdays are quite busy. But I want to do this thing. It was asked by Vikas ji, and because he certainly don't understand Hindi, don't understand English, so I'm going to do this much part in Hindi. Last portion something 15 minutes. कैसे इलाज होगा? कोई बीमार पड़ गया व्यक्ति, मंत्र से ठीक करेंगे.
तो वो जो है ना, वो कोई जगन्नाथ ज्योतिष परंपरा की पुस्तक पढ़ के आ गए हैं। मे गॉड सेव द डिपार्टेड सोल। सॉरी। या whatever. So he wrote he read some book from Jagannath Parampara. अच्युतानंद जी तो खैर किससे पूछे, समझ नहीं आता। तो he said कि the book, let me not take the name, gives a custom mantra which can be modified and used by the person for a remedy. Yeah, just a second. Yeah, ये तो मिल जाएगी। बीच में झगड़ा है, पृष्ठभूमि में देखना है, नौकर। Right, so it was some mantra, so it was like I just forgot it. दिमाग से उतरा है। Yes, Om Namah Shivaya dash whom jum sir. So that dash should have the nakshatra. क्या ही क्या ही फैंटेसी दिख रही है, भगवान ही जानता। मतलब मृत्युंजय का होम जूम से ले लिया, बिकॉज दैट इज जल मंत्रा। तो मतलब अगर उसको ठंड लगाए तो जल मंत्रा करने से तो एकदम फुल बाबू पाप आएगा, साथ में बता रहा हूँ, पाप लगेगा। भगवान मारेंगे लठिया से ऊपर जाके स्वर्ग के दरवाजे पे। इसके पहले कि आपको यमराज बोलने की स्वर्ग भेजना नरक भेजना, तो शिव जी मारेंगे लाठी लेके तेरे को, पगले। ऐसे ऐसे ये करने को कहा था नहीं कि जाके मैंने नाम नाम बोल आदमी। आप उस नलायक बच्चे की तरह जो माँ बाप का नाम खराब कर रहा है नीचे आकर के, नाम खराब करे। खैर तो कह रहे हैं ये कारगर साबित नहीं हुआ। कोई ऐसी बात बताइए जो वाकई में असर दिखाए। खैर कारगर कैसे ही साबित हो जाए। अरे बिल्कुल बात कर सकती हो यार, तुम क्यों नहीं। हाँ, तो कुछ ऐसा बताइए जो सच में असर दिखा दे। पहली दो तीन बातें इसमें। पहली बात देखो भाई, ऐसा है ज्योतिष है, भगवान नहीं। और डॉक्टर का विषय है, हमारा नहीं। उसके बाद भी एक क्लास में पहले भी बोल चुका हूं, फिर से बोलूंगा, द्वितीय संवाद भावार्थ प्रमाण्यम। अगर बीमारी दो तीन जगहों से दिख रही है तो डॉक्टर नहीं बचाएगा, आप नहीं। अगर योग कमजोर है, देख के लगता है कि समस्या गंभीर नहीं है। हमारी एक क्लाइंट ने हमसे प्रश्न किया, जब मैं कुछ प्रश्न पढ़ाने वाला था तभी, तो उनका भी अष्टमंगल संख्या मैंने ले ली उनसे। तो उनको ब्रेस्ट पे एक थोड़ा सा सिस्ट हो गया था महिला को। उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा कि सर ऐसा लाइक चेंजेस वेंजेस देखे जो भी किया, तो डॉक्टर ने कैंसर का टेस्ट बोला है। अब कैंसर के टेस्ट के रिजल्ट जल्दी नहीं आते, और उस टाइम कोरोना शुरू ही हुआ था। तो मैंने प्रश्न किया, और प्रश्न करके मैंने बोला कि वैसे तो कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा बर्न टाइप का कुछ आ गया था अकॉर्डिंग टू हर। तो मैंने कहा कि देखो प्रश्न तो हमें कैंसर नहीं बताता, नाप का चार्ट बताता, तो कैंसर तो हो नहीं सकता। अधिक से अधिक या तो गर्मी के हेतु कुछ हो गया हो तो हो गया हो, एट मैक्स कुछ गुल्म वगैरह हो सकता है। गुल्म माने कि कुछ लाइक क्या उसको कहते हैं, मांसपेशी में कुछ गांठ वाठ पड़ने से कुछ साइज ऊपर नीचे होने। क्यों भाई? अब क्योंकि मैं कुंडली देख के क्लियर हूं कि भाई इसको कैंसर नहीं है, ज्योतिषीय कुछ भी समस्या नहीं है, अब मैं उपाय दूंगा। कैंसर के मामले में स्टंट नहीं मारना, वरना क्लाइंट के घर वाले बहुत मारेंगे क्लाइंट के निपट जाने के बाद, और करने नहीं देंगे। भाई साहब कलकत्ता में बड़े महान ज्योतिष से गलत प्रेडिक्शन दिया था, उसको ज्योतिष नहीं करने दिया 1 साल उसने। फिर कहीं भी ज्योतिष करता था वो बंदा पहुंच जाता, माइक छीन लेता था उससे। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत एक्सक्लूसिव बॉडीगार्ड लेके चलते हैं। मैं तो खैर कहीं जाता ही नहीं, वरना एजेंसी से हमने भी बात करी रखी है, हमने कहा भैया भरोसा नहीं। खैर चलिए मजाक चुक सपाट। जब आप कुंडली देख के, प्रश्न को देख के क्लियर हो जाएं, समस्या अतिशय गंभीर नहीं है। ज्योतिष में जब पता चले ना समस्या गंभीर है, तो ज्योतिषी को बोलना चाहिए था हमसे नहीं होगा। जब लगे गंभीर नहीं है तभी हमसे होगा। अगर गंभीर समस्या दिखे तो डॉक्टर ही करेगा। मंत्र साथ में दे सकते हैं, ओके फाइन, गुड।
लेकिन डॉक्टरी सलाह पे ज्यादा निर्भर रहे, मंत्र पे ना। अगर समस्या गंभीर नहीं है तो मंत्र दे सकते हैं। मंत्र कहाँ से देंगे? रोग कुंडली होती है, जिस दिन जातक को लक्षण दिखाई पड़े उस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उसको देखना चाहिए। तो पहले सिम्टम कौन से दिन दिखाई पड़े वो तो पता चल ही जाता है कि पहला सिम्टम कब हुआ। अगर सिम्टम ना भी पता चले तो कब श्योरिटी हो गई कि है, मतलब कोरोना कब पकड़ा वो तो पता नहीं, लेकिन पहली पहली बार छाती में किस दिन दर्द हुआ सो तो मालूम है। उस दिन का चंद्रमा किस प्रकार के नक्षत्र इत्यादि में है, किस प्रकार के ग्रह से प्रभाव इत्यादि बना रखा है, वो थोड़ा ध्यान में रखें। पिछला ग्रहण अगर 6 महीने के भीतर ग्रहण हुआ है, जिस नक्षत्र में ग्रहण हुआ हो, अगर उसमें जब चंद्रमा था तब बीमारी हो गई तो बहुत गंभीर मामला है, और माथा पच्ची ना करें उसमें ज्यादा। महासूत्र बहुत जरूरी है। महासूत्र का हमेशा ध्यान रखेंगे। बीमारी में महासूत्र क्या होता है पता तो आपको फिर होगा नहीं, बता ही देता हूँ। महासूत्र मानेगी जातक के कुंडली में नवतारा बना के उसमें से जो 3, 5, 7वीं तारा है, प्रश्न में उस समय उस तारा में चंद्रमा होना नहीं चाहिए। इसमें विकास जी ने प्रश्न पूछा था कि सर जातक की कुंडली से देखना है कि आपकी कुंडली से? जो उसका 5 है वो आपका भी 5 है, दोनों कुंडली में से कहीं से देखो 3, 5, 7 ऑड नंबर है, ऑड नंबर हमेशा बराबर रहते हैं। तो जो इधर से आपका 7 बनेगा वो उधर से 3 बनेगा, तो कोई फर्क नहीं, किसी भी चार्ट से कहीं भी देखो कैसा भी जंप करो बराबर ही बैठेगा। महासूत्र बहुत जरूरी है। प्रश्न में 3 प्रकार अष्टमंगल में, बाकी प्रश्न तो छोड़िए, ये आपको वो क्या ही ज्योतिष में पढ़ा दिया है, भाग भगवान ही जान रहा है। 3 अधिक सूत्र, अंश सूत्र और महासूत्र बहुत जरूरी होते हैं, ठीक। कोई भी डेथ डिजीज डेबिट का प्रश्न आएगा तो महासूत्र बहुत जरूरी है। महासूत्र ये नेटिव का जो तारा है उससे प्रश्न में जो चंद्रमा जिस तारा में है वो तारा कितना है, तीसरा, पांचवा, सातवां, दूसरा, तीसरा, जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रकृति, साधक, बाधक, मैत्र, अतिमैत्र, महासूत्र। दूसरा होता है अंश सूत्र और तीसरा होता है अधिप सूत्र। अधिप में लग्न का अधिपति और आरूढ़ का अधिपति लेते हैं। आरूढ़ माने या तो अष्टमंगल संख्या, नहीं तो स्वर्ण आरूढ़। फिर ज्योतिषी लोग आजकल सोना लेके चलते नहीं है, वैसे मेरे घर में छोटा सा सिक्का है लेकिन मैं लेके क्लाइंट के पास जाता नहीं, बच्चा बच्चा लेके चलते बहुत नुकसान हो जाता है भाई। 8-9 हजार रुपए का बनता है सिक्का, पता है आपको, बहुत महंगा बनता है। और 8-9 हजार का सिक्का ट्रेवल में चलने में उचित नहीं है ना। ज्योतिषी के घर आवे आप, अपने टेबल पे आएंगे तो जरूर आपको स्वर्ण आरूढ़ दे दूंगा, बट कहीं और क्लाइंट के पास जाना हो तो इतना छोटा सा सिक्का सोने का रख के चलना अच्छी बात नहीं। कोई देख के ले तो रास्ते में मटर कर देते हैं, तो अच्छा जमाना नहीं। अधिक सूत्र माने लग्न का और आरूढ़ का स्वामी। तीसरा अंश सूत्र माने कि लग्न का और चंद्रमा का नवांश अधिपति। अधिप सूत्र लग्न और आरूढ़ का स्वामी, इसका इस्तेमाल नॉर्मल चीजों में बहुत ज्यादा हुआ है। नॉर्मल जो प्रश्न होंगे, नौकरी कब मिलेगी, बच्चा कब मिलेगा, फलाने में। जो अंशक सूत्र है उनका विचार, अगर कुछ ऐसा प्रश्न हो कि क्या मैं सुख प्राप्त करूंगा, क्या मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, क्या ये कार्य होगा, इसमें जो है अंश सूत्र जो नवांश के ऊपर से डिपेंडेंट है उसका ज्यादा इस्तेमाल होगा। ठीक है, थोड़ा सा बिजली नहीं है इस वजह से आपको मेरा चेहरा ऐसा दिख रहा है, वापस आ जाएगी तो ठीक हो जाएगा। ये 3 चीजों का विचार करने का। तो जब भी रोग ऋण का प्रश्न होगा, महासूत्र का विचार कतई ना भूलें जिंदगी में। आपको लगता है कि अरे ये क्या है, ये तो कुछ, इसको महासूत्र क्यों कहते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। प्रश्न मार्ग और केरल का अष्टमंगल सबसे एक्सटेंसिव सिस्टम है ज्योतिष का। आपको पता नहीं इसलिए ऐसा मन में आपके वहम आ जाएगा, लेकिन आप इस्तेमाल करके देखेंगे आपको पता चलेगा। अच्छा, हर नक्षत्र के डिफरेंट मंत्र हैं। अभी जब हम मंत्र के बारे में बात कर रहे थे तब आपको पता होगा कि मैंने बोला विष्णु रराटवसी बड़ा जरूरी मंत्र है, या मृत्युंजय बड़ा जरूरी मंत्र है। पूरा मंत्र तो नहीं है, स्टार्टिंग की लाइन से मंत्र पहचाना जाता है। या त्रिनिपदा बचक्र में जो मंत्र, स्टार्टिंग की 2-3 अक्षरों से मंत्र पहचाना जाता है। इसलिए केरल में एक परंपरा होती है कि जब ज्योतिष को श्लोक याद नहीं रहता तो वो श्लोक की कुछ शुरुआती लाइनें याद कर लेता है, ताकि रेफर करना हो तो 3 लाइन तो बोल दो तो रेफर हो सकेगा। अदरवाइज आप बोलोगे वहां लिखा है, वहां, वहां कहाँ? आप बैठो ऑटो में, बोलो भैया वहां चलो, कहाँ चलो? दिमाग में ऑटो घुसाना है क्या उसके? तो रेफरेंस के लिए शुरुआत की ही 2-3 लाइनें जो कही जाती। अगर अश्विनी मंत्र में तो लाइक पॉइंट में फिर से क्लियर कर दो,
जिस दिन व्यक्ति को लक्षण दिखाई पड़े उस दिन का चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो। अगर लक्षण दिखने का दिन पता नहीं तो जिस दिन जातक को ये लगा कि जो भी पता हो बीमारी किस दिन पकड़ी अगर वो मालूम है तो वो नहीं पता तो जिस दिन लक्षण दिखे वो दिन। अगर लक्षण भी दिखाई नहीं पड़े तो जब जातक ने प्रश्न पूछा या जब दूत आया, एक बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न में रोग के जितने भी सूत्र हैं इस बात को ध्यान में रख के लिखे गए हैं कि कोई आदमी पूछने आया, ठीक, इसको ही ध्यान में रख के लिखे गए, कोई पूछने के लिए आया, इसलिए उसको परीक्षा कहते हैं हमेशा। परीक्षा मतलब जिसने पूछा, जरूरी नहीं है क्लाइंट ने, क्लाइंट तो बिस्तर में पड़ा है ना उधर, कहां से पूछेगा वो। तीनों में से जो भी कुंडली सुलभ होगी उसके हिसाब, एक बात और ध्यान रखिएगा, कुंडली गायब होगी, कुंडली चोरी होगी, प्रश्न नहीं मिलेगा, इसका भी कॉम्बिनेशन होता है। वो कॉम्बिनेशन आपको दिख जाएगा, लेकिन मुझसे नहीं पूछना, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन कॉम्बिनेशन होता है, ये बता दे रहा हूँ, वो आपको दिख जाएगा। जब आपको पता है कि परीक्षा कुंडली नहीं है या ये वो नहीं है तो उसका एक सटल कॉम्बिनेशन होता है जो चार्ट में होता है, पता चलेगा। आप बोलोगे शनि लग्न में होने से झूठ बोलता है सर, तो शनि केंद्र में होगा, ऐसा नहीं होगा। शनि केंद्र में 2 घंटे रहेगा, 2 घंटे बहुत लंबा समय होता है, 2 घंटे। अब प्रकाश ग्रह और उपग्रह इत्यादि का जो मैंने बोला था कि केरल के प्रश्न में भरपूर, बहुत अधिक, अत्यधिक इस्तेमाल होता है, ठीक है। अश्विनी के लिए महामृत्युंजय मंत्र करना चाहिए, यू कैन नोट इट डाउन, अगर आपको उतारने का मन है तो आप उतार ले, नहीं तो कोई बात नहीं। अश्विनी में महामृत्युंजय मंत्र करना चाहिए। भरनी में यमायत वेती मंत्र करना चाहिए, जो मैंने उनको मैसेज लिख के भेजा था विकास जी को, बस मैं वही पढ़ रहा हूँ, तो मैंने कॉपी में नहीं नोट किया हुआ है कुछ भी। कृतिका में अग्नि मर्देती, रोहिणी में ब्रह्मा ययेति, ब्रह्मा ययेति मंत्र था पहले, अभी जब हमने मंत्र किया तो ब्रह्मा ययेति मंत्र था उसमें, वो रोहिणी के लिए करना होता है। मृक्षरा में इमं देवेति, ये मंत्र भी था। आद्रा में नमस्ते रुद्र इति मन्यव सुनवते मंत्र करना है। पुनर्वसु में अदित्यो रीति मंत्र करना है। उसमें बृहस्पति मंत्र करना है। आश्लेषा में नमोस्तु सर्पेति मंत्र करना है, नमोस्तु सर्पेति मंत्र राहु के मंत्र में था, याद होगा आपको। मघा में पितृभ्य इति मंत्र करना है। पूर्वा फाल्गुनी में भग प्रणेति मंत्र करना है। उत्तरा फाल्गुनी में दध्यावेति मंत्र करना है। हस्त में उदत्यम जात वेदेति मंत्र करना है। चित्रा में त्वषा तुरिगति मंत्र करना है। स्वाति में व्योरग्नेति मंत्र करना है। विशाखा में इंद्राग्नि मंत्र करना है। अनुराधा में नमो मित्रेति मंत्र करना है। ज्येष्ठा में त्रातारमिंद्र मंत्र करना है। त्रातारमिंद्र शायद था भी इसमें जो स्लाइड अभी पढ़ाई ना, त्रातारमिंद्र मवितारमिंद्र दातारमिंद्र करके जो मंत्र था वही है। मूल में माता पुत्रोति, पूर्वाषाढ़ा में आपो धर्मेति सॉरी, उत्तराषाढ़ा में विश्व देवेति, श्रवण में श्रवण नक्षत्र में विष्णु राटमसी जो भी पढ़ा है। धनिष्ठा में वसुः पित्रेति, सदविशा में वर्णस्तंभेति, पूर्वा भद्रा में ऐर्बुदन्येति, उत्तरा भद्रा में भी सेम ऐर्बुदन्येति, और रेवती में पूषण्येति। ये मंत्र करना चाहिए 108 बार। तो जातक या उसका घर परिवार का ही कोई व्यक्ति करे, अगर घर परिवार का कोई व्यक्ति करेगा तो संकल्प लेके करेगा। शिव संकल्प वस्तु के बिना मंत्र का फल है नहीं, ये भी बता दे रहा हूं मैं आपको। आप मंत्र क्यों कर रहे हैं ये बात देवता को भी तो पता होगा ना भाई। आपको मन में पता है, देवता आपके मन में रहते नहीं, आपके मन में देवता रहते तो मंत्र की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर तो संकल्प अपने भी मंत्र में अगर कामना से मंत्र किया जाता हो तो संकल्प की आवश्यकता है, तो घर परिवार को तो छोड़िए, तो करना ही पड़ेगा। अगर ब्राह्मण इत्यादि से करवाना है तो 1 लाख का जाप कराना चाहिए। अब आप बोलोगे सर 1 लाख जाप करने में तो बहुत समय लगेगा, ब्राह्मण की संख्या बढ़ाता है उसके लिए। अगर 1 लाख मंत्र एक दिन में कराना हो तो मतलब 50 ब्राह्मण लगेंगे टेक्निकली ना, काउंटिंग ज्यादा ज्यादा होती रहेगी, सबने सब एक सेम आदमी के लिए संकल्प लिया है। इसके लिए ब्राह्मण से जो है कराने का ज्यादा विधान है शास्त्रों में, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आजकल तो अंधविश्वासियों की और ज्यादा रेशनल लोगों की कोई कमी है ही नहीं, दोनों ही प्रकार के लोग बढ़ गए दुनिया में, जैसा भी है। इन मंत्रों का जो है आलम्बन ले सकता है आदमी, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मंत्र से बीमारी ठीक करना कुछ मतलब वो गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं, कोई सीरियस काम है। ज्योतिष में वैसे तो गुड्डे गुड़िया का खेल कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों ने बना बहुत बढ़िया रखा है। शनि चौथे घर में है तो आपकी शादी खराब, वाह वाह प्रभु वाह, कहाँ है आपके दिव्य नेत्र। ठीक है, तो
इसका जो है इस प्रकार से हम रेमेडी में मतलब मंत्र से बीमारी ठीक आप कर सकते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, हर ग्रह का हर्ब इत्यादि है, उससे रिलेटेड चीजों को दिया जा सकता है, उसका भी इस्तेमाल, जैसे कि सूर्य आंख या मदार को दर्शाता है। आंख का पेड़ घर में नहीं लगाना, आंख की छाल से नहाना भी नहीं है, ठीक है। आंख आंख की जो टेंडेंसी होती है वही सूर्य की। आंख को पता है क्या कहते हैं? नहीं, नहीं पता होगा आपको ना शायद। कौन सा ग्रुप है जहाँ वो आंख का रेमेडी दे रहे पर्सन? धतूरा कहते हैं पगले। सिर्फ कुछ जनरल चीजें घर में नहीं रखी जाती है ना इस्तेमाल की जाती है, ये मैं आपको बता दूं, नहीं पता होगा तो खैर। अब क्रिश्चियन लोग क्या ही वेद कुरान पढ़ेंगे, गोली मारिए उसको। टॉपिक पे आते हैं। धतूरे को अंतः सार वृक्ष बोला है, ठीक। सूर्य धतूरे का या आंख का कारक नहीं होता, अंतः सार वृक्ष का कारक होता है, जिसका एग्जाम्पल है आंख का पौधा। लेकिन केवल आंख ही अंतः सार वृक्ष नहीं है, अंतः सार वृक्ष और भी बहुत सारे हैं। अगर वसंत माई का आप चेहरा देख पाते क्लास में तो वो आपको भी हंस के दिखाते, क्योंकि एक दिन क्लास में पढ़ाया था। ये टेक्निक है, किसी कोर्स में किस दिन पढ़ाऊंगा या किस दिन फ्री क्लास में भी कर सकते हैं, आज नहीं करेंगे, समय का कांटा थोड़ा जल्दी जल्दी भाग जाता है। खैर, तो सूर्य माने अंतः सार वृक्ष। अंतः सार वृक्ष कहने का क्या मतलब कि कोई ऐसा इलाज दिया जावे जिसके भीतर में, जिसके अंदर में सार हो। क्या समझना? टेबलेट। टेबलेट में क्या ऊपर कवर कुछ और होता है और अंदर कुछ और रहता है? किस प्रकार का टेबलेट? या तो दो प्रकार के, एक टेबलेट होता है वो प्लास्टिक टाइप का रहता है, बीच में कुछ होता है, टेबलेट ऊपर नीचे अलग अलग खुल जाता है, वो अंतःसार हुआ। दूसरा होता है नॉर्फॉक्स टीजर, सेम ही सॉल्यूशन का पूरा टेबलेट बना होता है, ब्रिक टाइप। वो किस में आएगा? जुपिटर में आएगा, क्योंकि जुपिटर फलदार वृक्ष को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। जो सुई है, सुई इंजेक्शन, वो किस में आएगा? शनि में आएगा। शनि निर्वीर्य को बताता है, निर्वीर्य चीजें मतलब जो अपने आप बॉडी में ट्रांसमिट हो नहीं सकती, तो पूरा छेद करके अंदर डालना पड़ेगा उसको। उसको मुंह के द्वारा नहीं लिया जा सकता, सिरप नहीं है कि पेट में जाओगे फिर अपने आप फैलेगा, अंतःसार है, उसमें अपना कुछ दम नहीं। तो इसलिए इंजेक्शन को चमड़ी के नस के भीतर घुसा के निकाल डालना पड़ता है, क्योंकि उसको खा लेने से भी वो काम नहीं करेगा। खा के जो चीजें काम कर जाएंगी उसको शुक्र दर्शाएगा दवाई में, क्योंकि शुक्र पुष्प दर्शाता है। पुष्प माने क्या? जिसके पास जाने से सुगंध आवे। पुष्प को देखने से सुगंध नहीं आता, पास जाने से सुगंध आता है। तो ये जो पेड़ इत्यादि जो बोले, देखो ऋषि कोई पागल तो था नहीं, ना ही ज्ञान का उसको बखान करना था कि वो पेड़ भी बता रहा है, ये भी बता रहा है। क्या क्या करना है सूर्य के पेड़ का, ये बताइए ना। भाई घर में धतूरा इत्यादि रखना वगैरह मना है वैसे टेक्निकली, अगर आपको पता हो शास्त्र से। क्या होता है, बहुत सारे ज्योतिष, लास्ट टॉपिक, बहुत सारे ज्योतिष कहते हैं कि पत्नी को ये नहीं, बच्चे के साथ ऐसा करने से शनि ठीक होता है। यार वो कॉमन संस्कार में आता है भाई। अगर आप उसका पालन नहीं ना कर रहे हैं, आप बिहार बिहारी लैंग्वेज नहीं ना कर रहे हैं, तो आप इंसान कहलाने की कैटेगरी में ही नहीं है। पहली बात, आप पशु ही कहलाने की कैटेगरी में। तो नॉर्मल की माँ बाप का आदर करने से राहु केतु ठीक होते हैं भाई, सबको करना चाहिए, संस्कार है। अब हिंदू नहीं है क्या? मतलब मुझे कोई ज्योतिष को मैं बोला, मैंने कहा कि मैं रोज अपनी माँ के पैर छूता हूँ, कभी आप माँ को मेरे आसपास देखेंगे तो मतलब सुबह उठ के मैं पक्का ही पैर छूता हूँ, चाहे मैं कहीं जाऊँ ना जाऊँ, माँ कहीं जाए ना जाए। बचपन में क्या था, स्कूल जाते थे तो हैबिट हो गई थी कि रोज पैर छू के जाते थे। अब तो फिर स्कूल जाना बंद। तो आज भी माँ कहीं भी रहती है तो मैं उसके पैर छूता हूँ, और अगर मैं सुबह पैर नहीं छूता, मतलब अगर माँ पहले जगी हो, तो जैसे मैं बाल में कभी तेल लगाऊंगा तो उसके पैर में भी तेल लगाता हूँ 5 मिनट बैठ के, इसलिए क्लासेस मेरी लेट होती है। पैर में तेल लगाते आराम से बात कर सकते हैं। मैंने कहा छोड़ो ना, गोली मारो, ठीक है यार, पढ़ लेंगे सारे, क्या जल्दबाजी हो गई ना, आज ट्रेन छूट रही है। नहीं, इसलिए क्लासेस लेट होती है मेरी तेल लगाने के चक्कर में। अभी भी सेम हुआ, 4 बजे का प्लान करके बैठा था मैं, बाल में तेल लगा रहा था तो माता जी बैठी थी, तो वो देख रही थी क्या, उसको अमेजोन प्राइम दे रखा है और नेटफ्लिक्स है, तो नेटफ्लिक्स पे मैंने उनको बोला ये देखो, तो वो प्राइम पे सिमरन देखने लगी बैठ करके ना, कंगना रनावत वाली। तो बैठी हुई थी और तेल लगा के हटा, मैं तो मैंने कहा कि लाओ पैर में तेल लगा दो तुम्हारे, तो जो भी लगा रहे थे। तो किसी एक ज्योतिष को बहुत पहले मुझसे बात करते थे, बोले कि तुम्हारा चंद्रमा तो अच्छा नहीं है लेकिन भले फल कैसे दे रहा है। तो जो भी है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता कैसे दे रहा है।
आप जानो भाई, आप ज्योतिष आदमी, मैं कहाँ ज्योतिष हूँ। मैं क्या है कि मुझसे कोई पूछे कि आपको ज्योतिष आते हैं, नहीं मैं भंगार बेचता हूँ, ज्योतिष ज्योतिष नहीं आते। एस्ट्रोलॉजर कहाँ है मेरे नाम के, ना आगे ना पीछे, ना फेसबुक पे, ना यूट्यूब पे, ना ट्विटर पे, कहीं एस्ट्रोलॉजर सुबह वाला आप कभी नहीं, कभी लिखा नहीं देखोगे, मतलब सत्य बता रहा, कभी नहीं लिखता मैं। तो ये पटनायक साहब वाला हाल है ना, टी टाइम टेल्स विद देवदत्त पटनायक है। चाय पे चर्चा कर देंगे कल से इसका नाम, वट एवर। तो वो ज्योतिष साहब से एक दिन ऐसे ही मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला माँ के पैर छुआ करो। मैंने कहा जब से होश संभाला तब से छू ही रहा हूँ और रोज छूता हूँ। उन्होंने कहा ये एक ऐसी चीज है, एक भी दिन 365 दिन में 365 दिन होता है, वो नागा नहीं कभी। अगर मैं माँ के पास ना हूं तब तो लगी मामला है, अदरवाइज 365 होता है, तभी तुम्हारे जो चंद्रमा का अच्छा फल आ रहा है। मैंने कहा यार इसमें चंद्रमा कहाँ से आ गया भाई, संस्कार है भाई, ये हिंदू व्यक्ति के संस्कार है। माँ बाप के पैर छूना संस्कार है आपके भाई, छूना ही चाहिए। कहते हैं पत्नी पे हाथ उठाओगे शुक्र खराब, अरे पत्नी पे हाथ आप उठाओगे क्यों, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है पहले तो। इंसान पशु है क्या? पशु होता है, कुत्ते होते हैं कि कुत्ता कुतिया को काट लेता है, कोई कुत्ते हैं क्या? इंसान है भाई। हमारे नाना जी में एक बात कहते थे, बेटे देखो मर्द होना आंखों में डर होना चाहिए, कि आदमी आंखें देख करके तुम्हारी चुप हो जाएगा, हाथ उठाना पड़ रहा है कुत्ता हो तुम, फिर इंसान नहीं हो उसके, क्योंकि जानवर भी तो सेम काम करता है ना, इंसान डांटता है। इंसान आपको डांट देगा, बोला वहां रख दो तो रख दो, जानवर डांटेगा क्या? काटता है सीधा। तो उनका पशु नहीं हो गया ना, इंसान रहिए थोड़ा सा। डांटना शास्त्र में कभी मना नहीं है, शास्त्र में डांटना कभी भी मना नहीं होता। शास्त्र में डांटने को बिल्कुल बुरा नहीं बोला है, क्योंकि इंसान डांट का सहारा नहीं लेगा तो क्या करेगा। मारना पीटना हमेशा खराब बोला है, बेटे को भी मारना खराब बोला है, पत्नी को भी मारना खराब बोला है, माँ बाप को भी मारना खराब बोला है। पशु थोड़ी ना है आपकी सीधा काटने चले जाएंगे, भैया 10 हथियार हैं आपके पास। ये मेरा कहना है कि ये सब जो कॉमन चीजें हैं ना, उपाय नहीं है ये, कॉमन ह्यूमन लाइफ है ये तो। और मतलब उसको करके आपकी जिंदगी में भला फल हुआ, इसमें तो चलो मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि चलो ठीक है, अलग बात है। मनुस्मृति भी कहती है कि अ, यत्र नार्यन्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, जो भी है। और देवता जहाँ वास करते हैं वो स्वर्ग होता है, और वहां रहने वाले स्वर्गवासी है। जो सपाट आपको औरत की इज्जत करने से, गरीब को पैसा देने से, दान देने से अच्छा फल मिला, वो तो ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, अच्छा फल मिलना चाहिए, शास्त्र में कहा है तो अच्छा फल तो मिलेगा। लेकिन ये उपाय नहीं है। हिसाब से आपके आसपास जो भी कमजोर आदमी हो दुर्गति प्राप्त, अगर वो कभी कभी दिखता है तो जब दिखे तभी दान करना चाहिए। अगर वो रोज दिखता है तो स्पेशल ओकेजन, यथा आपके जन्मदिन पे, घर परिवार में किसी के जन्मदिन पे, किसी की बरसी पे, होली दिवाली पे, उसको पैसे देने ही चाहिए। मैं नहीं मानता कोई भी आदमी अगर एक सफाई वाले को 100 रुपया दे देगा तो आपकी संपत्ति में कोई बहुत बड़ा अमाउंट घट जाएगा, ऐसा मुझे नहीं महसूस होता। अच्छा उसको भी कोई बहुत बड़ी वृद्धि नहीं होगी, लेकिन एक दिन वो बेचारा शांति से खर्चा कर पाएगा देने के लिए। और तो कुछ 100 रुपए में ना उसकी बदल रही है ना आपकी बदलेगी। तो ये सब कॉमन संस्कार है, जो उपाय है वो इससे इतर है, इससे अलग है, इसके ऊपर है समथिंग जो नॉर्मल ह्यूमन आचरण में नहीं आता। ये मंत्र पढ़ना रोज आपके आचरण में नहीं आता, मैं आपको बताऊं। सुबह उठ करके, वो कौन सा मंत्र है जी, हाथ में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य तू गोविंद प्रभाते कर दर्शन, कॉमन मंत्र है वो, ठीक है, सबको करना है। आप नहीं करते हैं और किसी ने बोला ना वो करने से हाथ की रेखा बदल कर रहे गधे आदमी, तो ये तो कॉमन है, ये स्पेशल नहीं है ना। उपाय वो चीज है जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर में नहीं, एक्स्ट्रा ऐड की जा रही है, उसको उपाय कहते हैं। जो नॉर्मल बताई गई है वो उपाय नहीं होता। इसको हम लोग कंटिन्यू कब करेंगे,